So, hello everyone. Today I am going to start the homeopathic pharmacy. Actually, what is homeopathic pharmacy? What is the aspects behind homeopathic pharmacy? How is it formed? The general concept of homeopathic pharmacy, the basic idea behind homeopathic pharmacy. We will be taking this topic today. So, first of all, before knowing homeopathic pharmacy, one should know what is pharmacy. So, pharmacy is the art and science of collecting, combining, compounding, preparing, preserving, and standardizing drugs and medicines from natural and synthetic sources. So, simply, it is the art and science of collecting and then combining and then compounding, preparing, preserving, and then standardization of drugs. Uh, uh, these sources can be covered from any natural sources or from any synthetic sources. Means collection से लेके standardization तक सारी process जो हैं, these are come under pharmacy. Along with this collection and collection to standardization, it also includes dispensing of medicines and the rules behind how to dispense, how should be the drug should be dispensed, and the rules and laws behind this. So this is the basic definition of general pharmacy. Along with the literal meaning of pharmacy also implies the place where medicines are made and distributed. एक ऐसी place जहाँ पे medicines बनाई जाती हैं and then distribute की जाती हैं, तो उस place को भी pharmacy कहा जाता है. This is the literal meaning of pharmacy. So this is pharmacy. Now we will move towards what is homeopathic pharmacy. Homeopathic pharmacy is so the definition is somewhat similar to the pharmacy, but it has its, along with the definition, it has its principles which are related to the homeopathy, and according to these principles all its collection and all the processes are done following the homeopathic principles. So what is homeopathic pharmacy? Let's read about it. It is an art and science of collecting, compounding, combining, preparing, preserving, and standardizing drugs and medicines from vegetable, animal, mineral kingdom, and certain physiological substances and morbid substances. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द सोर्सेज. इट हैज वेरियस सोर्सेज, वेरिएबल सोर्सेज जहाँ से हम ड्रग सब्सटेंस कलेक्ट करते हैं, लाइक वेजिटेबल, एनिमल, मिनरल किंगडम, सर्टेन फिजियोलॉजिकल सब्सटेंसेज. कुछ मॉर्बिड सब्सटेंसेज भी हमारे यहाँ ड्रग बनाई जाती हैं. नो सोर्स फिजियोलॉजिकल सब्सटेंसेज से भी ड्रग बनाई जाती है, साकोर्स. तो ये सारे सोर्सेज हो गए जहाँ से कलेक्ट किया करते हैं, कंपाउंडिंग एंड देन कंबाइनिंग, प्रिपेयरिंग, प्रिजर्विंग, and after that standardization of drugs किया जाता है. And this should be highlighted that this all is done according to the homeopathic principle mentioned by Dr. Hahnemann in Organ of Medicine, Materia Medica Pura, and Chronic Disease. तो मेडिसिन बनाने का एक अलग तरीका है, डिस्पेंस करने का एक अलग तरीका है, कलेक्शन, कंपाउंडिंग, सबका एक डिफरेंट तरीका है, विच शुड बी फॉलोड अकॉर्डिंग टू द होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स. जो प्रिंसिपल्स, लॉज, रूल्स होम्योपैथी के हैं उनके फॉलो करते हुए ये सारी चीजें बनाई गई, और ये सब हम रीड करते हैं होम्योपैथिक फार्मेसी में. सो फ्रॉम कलेक्शन टू स्टैंडर्डाइजेशन इट ऑल्सो हैज डिस्पेंसिंग पार्ट. तो dispensing medicines according to the prescriptions of homeopathic physician. तो homeopathic physician जो भी जिस तरह से उनके homeopathic principles को follow करते हुए prescriptions हैं, उनके according उनका dispensing होता है. So preparation part plus dispensing part के अलावा there is one more part which is also included in homeopathic pharmacy. This is legal and professional aspects. Legal and professional aspects include regulation of proper distribution of drugs and medicines. Drugs का कैसे distribution होना है, medicines किस तरह से जानी है, ये पूरा regulate करता है legal and professional aspects, which we also read under homeopathic pharmacy. Then along with there are some basic principles which we follow in homeopathy. These are monopharmacy, pharmacodynamics, and potentization. Monopharmacy, single medicine, pharmacodynamics, how medicines work, and then potentization, various scales, various potencies. These all are the basis of homeopathic pharmacy. इन्हीं के according medicine बनती है, इन्हीं के according medicine dispense होती है. So this all we read in homeopathic pharmacy. Then what as a whole homeopathic pharmacy should be consist of. The homeopathic pharmacy should be fully consistent with the holistic and individualistic philosophy of homeopathy based on the theory of dynamics. जो होम्योपैथी के प्रिंसिपल हैं, जो होम्योपैथी के
फिलोसफी है दैट इज होलिस्टिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच जो है उसको फॉलो करते हुए पूरी होम्योपैथिक फार्मेसी होनी चाहिए, शुड बी एक्विंट होनी चाहिए उससे, शुड बी consistent होनी चाहिए following the holistic and individualistic philosophy of homeopathy. So this is overall the definition and explanation and details about the homeopathic pharmacy. Now next, sources of homeopathic pharmacy. The in the previous slides which we all had learned studied right now, it's all come from these sources. These are the Hahnemann's writing जो उन्होंने धीरे धीरे इवॉल्व करी है. पहले उन्होंने एक ऐसे लिखा, उसमें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया होम्योपैथिक फार्मेसी को, देन स्टेप बाय स्टेप 1808 में देन एक और उनका पेपर आया, एंड देन 1810 से 1921 तक ऑर्गन ऑफ मेडिसिन फर्स्ट टू सिक्स एडिशन में इवॉल्व होते होते उन्होंने होम्योपैथिक फार्मेसी को भी इवॉल्व हुआ, कैसे मेडिसिन कलेक्शन, ड्रग सब्सटेंसेस कैसे चेंज होते चले गए, कैसे उनकी पावर्स चेंज होती चली गई, कैसे उनके स्केल्स चेंज हुए, कैसे पोटेंटाइजेशन चेंज हुए, ये सब उन्होंने उसमें बताया है. देन मटीरियल मेडिका प्योरा, देन 1820 में एक और प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियन, एंड देन क्रॉनिक डिजीज. सो इफ एनीवन वांट टू गो फर्दर, if anyone want to probe further in homeopathic pharmacy, he or she can go through these sources, and which we the things which we all learn from in homeopathic pharmacy is all have been gathered from these sources. These are the basic sources of homeopathic pharmacy. So now we have read about certain points in the homeopathic pharmacy definition, and I'll try to explain one by one here so that it will be more clearer to all of you. Then homeopathic pharmacy includes, the first of all is collection. कलेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जब तक आप ड्रग ही आपके पास नहीं होगी, हाउ विल यू पीपल वर्क ऑन देयर ड्रग. तो गैदरिंग एंड प्रोक्योरिंग द रिक्वायर्ड ड्रग सब्सटेंस, जो भी आपको ड्रग सब्सटेंस चाहिए उसको गैदर करना, प्रोक्योर करना, कम्स अंडर हेडिंग कलेक्शन. एंड देन आइडेंटिफिकेशन, ascertaining the genuineness and purity of the drug substance. कलेक्शन के बाद how much the drug substance is genuine, how much the drug substance is pure. It is done by macroscopical experiments, certain chemical studies, जिनके through हम genuineness and purity जो है drug substance की बनाते हैं. तो collection के बाद then their identification, then qualitative analysis. The process of ascertaining the presence or absence of certain substances in a sample, what impurities are present, on confirming the absence of certain impurities. Like if you have collected the drug substance, you have identified the drug substance, now its qualitative analysis is as important as, like, if you are taking certain drug substance and if there are some impurities, then those impurities should be identified and then eventually remove होना चाहिए उनको. तो कोई ऐसी impurities तो नहीं आ गई हैं, या फिर अगर आई हैं तो उनको हटाना है. तो this all we read under qualitative analysis, so that the genuineness and purity of the drug can be maintained. So after qualitative analysis we have quantitative analysis. Quantitative analysis का मतलब है कि आपने constituents का nature पहचाना, जो भी आपने सैंपल लिया ड्रग सब्सटेंसेस का, उसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो आप ड्रग बनाना चाह रहे हो वो कितना है, हाउ मच ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ मच ऑफ ईच कंपोनेंट और ऑफ स्पेसिफाइड कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस. कितनी क्वांटिटी का ड्रग सब्सटेंस बन सकता है या कितना प्रेजेंट है जो कि यू कैन यूज इन योर आगे स्टडी में. सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस. देन प्रिजर्विंग. Drug substances have to be kept from destruction of their medicinal powers. Once you have gathered, identified, qualitatively and quantitatively analyzed, then you have your drug substance. Then the next important thing comes under preserving. जो आपने drug substance है उसको proper preserve करके रखना है, so that its medicinal powers do not डिस्ट्रक्शन ना हो जाए, खराब ना हो जाए, जो प्योर फॉर्म में था वो फिर से इम्प्योर ना हो जाए. तो ये सब प्रिजर्विंग हेडिंग के अंदर आता है. एंड देन स्टैंडर्डाइजिंग. मेडिसिन प्रिपेयर्ड शुड कंफर्म टू द ऑफिशियल homeopathic pharmacopoeia or any other authoritative text so as to maintain a uniformity in the preparation of medicine. किस medicines की preparation में uniformity maintain करने के लिए एक standard set
किया जाता है जनरली होम्योपैथिक फार्माकोपिया. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, देन देयर इज HPI, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया. उसने एक प्रोटोकॉल सेट किया है. दे हैव सेट uniform standard according which the preparation of medicines to be done, so that wherever we can go in India, we have that मेडिसिन विल बी इन द सेम स्टैंडर्ड फॉर्म. हमें हर जगह से वो मेडिसिन सेम यूनिफॉर्मिटी के साथ मिले, whether you buy it from north, whether you buy it from west, whether you buy it from south or any of the place in India. If it is made from made according to the protocol of HPI, Homeopathic Pharmacopoeia of India, so there will be definitely a uniformity in the preparation of medicines, and standard of the medicines can be maintained. So this all comes under standardization. Then combining, act of uniting two or more substances physically or chemically. फिर अगर कुछ आपको कुछ नया कंबाइन करके कुछ दूसरी ड्रग्स बनानी है तो कंबाइनिंग भी इसके अंदर आता है. देन कंपाउंडिंग भी आता है. Compounding, act of uniting two or more elements in fixed proportion to form an altogether new product. Compounding is basically a form of combining. Compounding में definite proportions में जो है mixtures किए जाते हैं according to the product. This new product will have properties different from those of constituents. So constituents की जो property थी, मिलने के बाद 2-3 constituents मिलके आपने compounding किया, मिलाया, एक नया प्रोडक्ट मिला जिसके ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगे. फॉर एग्जांपल कैलकेरिया सल्फ, मैग्नीशियम म्योर, नेट्रम आर्स एक्सेट्रा आर ऑल कंपाउंड्स. They have in their inheritance a few of the basic properties of their constituents, but as a whole they have altogether new. These are altogether new product and altogether new properties. So there is one highlighted note here that like combining and compounding is advocated prior to patentization and proving. If we are doing any combining or compounding, we are combining, mixing 2 or 3 products, then that should all be done before patentization and proving. Means here it's been said कि if you want to combine 2-3 products, then combine them according to the preparation, whatever proportion you want to take, then combine them, and then when new product you get, then go for their patentization and go for their proving, so that the altogether new symptoms, new properties can be revealed. So this is a highlighted one and this should be followed. And then quality control during preparation. Mother tincture, mother solution, mother substance and their potencies are prepared according to the old method and the new method. तो जो preparation हो रही है drug बनाने की, वो according to the methods हो रही है, according to the protocol होनी चाहिए. उस time पे भी quality हमें maintain करनी चाहिए. तो old method से बनाई है, new method से बनाई है, तो this all should come under quality control during preparation. Then quality control, it is to ensure that drug substance and other preparations contain essential compounds within a predetermined range of composition and then impurities do not exceed certain specified limits. एक जो quality control जो drug बाद में जो बन के आई है, that should be according to the protocol, और उसमें ensure होना चाहिए कि जो drug substance है या जो अदर प्रिपरेशन हैं एसेंशियल कंपाउंड्स की, वो एक रेंज के अंदर है जो ऑलरेडी प्री डिटरमाइन की हुई है अथॉरिटीज ने. दैट शुड बी अंडर दैट रेंज. और अगर इम्प्योरिटीज या तो नहीं है, इफ इम्प्योरिटीज आर देयर देन दे शुड नॉट एक्सीड सर्टेन लिमिट्स. दिस क्वालिटी कंट्रोल वहां के लिए है व्हेन यू हैव प्रिपेयर्ड योर ड्रग सब्सटेंस इन मदर टिंक्चर, आपके पास एक एसेंस आ चुका है ड्रग का, उसके बाद उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए है कि अदर जो प्रिपरेशन है, जो ड्रग सब्सटेंस है, उसके जो इसेंशियल कंपाउंड्स है, उसका एक प्री डिटरमाइंड, जो अथॉरिटीज ने प्री डिटरमाइन किया है रेंज, वो होना चाहिए. एंड देयर शुड बी नो इम्प्योरिटीज, एंड इफ इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट दे शुड नॉट एक्सीड सर्टेन स्पेसिफाइड लिमिट्स. एक सर्टेन लिमिट के ऊपर नहीं होना चाहिए. तो दैट विल ऑल कम अंडर क्वालिटी कंट्रोल. Then we have dispensing. It means preparing and serving the medicinal preparation as per the direction of a physician. तो जैसे physician ने direct किया है, जिस तरह से medicine patient को prescribe करनी है, that all come under dispensing heading. Preparing and serving the medicinal preparation as per the direction of physician. Then we have branches of homeopathic pharmacy. There are 2 branches of homeopathic pharmacy. First is pharmacy proper and second is galenical pharmacy.
So I will here give you a slight glimpse of what these two branches are. So first is pharmacy proper. It consists of official pharmacy and extemporaneous pharmacy. Official pharmacy is first part of official pharmacy, as it includes is preparation of drugs according to the official pharmacopoeia. Hence this part is concerned with pharmaco. Official pharmacy means जो official authorities के according जिसमें दवाइयाँ बनती हैं, जो drugs बनाई गई हैं, वो according to the homeopathic official homeopathic pharmacopoeia को follow करते हुए बनाई गई हैं. There are some important drugs which are not included in any official pharmacopoeia but are prepared according to the conventional methods. कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो फार्माकोपिया में नहीं इंक्लूड की गई हैं और उनको फिर हम कन्वेंशनल मेथड से ही प्रिपेयर करते हैं. एग्जांपल यूहिम्बियम, लिएट्रिस, एलिस्टोनिया. The procedure described under this part are performed in pharmaceutical lab. ये labs में perform होते हैं, but जो basically जो maximum drugs हैं वो official pharmacopoeia के according ही बनता है. The country you are residing it, every country has their own pharmacopoeia. वहाँ की conditions को देखते हुए, वहाँ के geographical, geometrical सारी conditions को देखते हुए जो एक pharmacopoeia ने जो protocol set किया है दवाइयों को बनाने का, drugs को बनाने का, उसके according जो medicines बनती हैं वो सब official pharmacy के branch के अंदर आती हैं. And then we have extemporaneous pharmacy. It forms the latter or last part which is concerned with prescription and dispensing. So official pharmacy में आपने medicines बनाई according to the pharmacopoeia, and extemporaneous pharmacy में this is last part of pharmacy. इसके अंदर prescription and dispensing. This consists of the preparation and distribution of medicines according to the prescription of physician. Homeopathic physician है जिस हिसाब से prescription किया है उसके according preparation and then accordingly distribution of medicine. The procedure described under this part are practiced in the dispensary. तो जो procedures होते हैं जो भी prescription से related, dispensing से related है, obviously we will be practicing these things in the dispensary only. So pharmacy, first is pharmacy proper, and it has two parts. You can say first is official pharmacy and then second is extemporaneous pharmacy. First parts in official pharmacy include this thing preparation, and the second extemporaneous pharmacy include prescription and dispensing. Then we have Galenical pharmacy, a pharmacy which follows the methods and theories of Galen, a 2nd century Greek physician, is known as Galenical pharmacy. Galen एक Greek physician हुए थे 2nd century में, उनकी अपनी methods और theories थे और उसको जो pharmacy उनकी theories और methods को follow करती है तो Galen से Galenical pharmacy. This branch is related to the preparation of crude drugs only, hence it is not acceptable to true homeopaths. क्योंकि गैलेनिकल फार्मेसी में क्रूड ड्रग्स की प्रिपरेशन के बारे में बताया गया है, बट वी हैव इन होम्योपैथी वी हैव पेटेंटाइज्ड इन डायनेमिक फॉर्म. वी आर यूजिंग आवर मेडिसिन इन डायनेमिक फॉर्म. So this Galenical pharmacy is not sort of acceptable to true homeopaths because the medicines prepared following the Galenical pharmacies are in crude form, and in homeopathy homeopaths are utilizing the potentization form, dynamic form, and which goes according to the principles of homeopathy. So this crude form, crude preparation of drugs, preparation of crude drugs is not acceptable under homeopathy. So this one is second, Galenical pharmacy. Then classification of pharmacy, it has two major divisions, theoretical and practical. कुछ चीजें हम theory में पढ़ते हैं and कुछ चीजें हम practically करते हैं. Theoretical pharmacy, it consists of physical and biological assessment as well as professional courses that need to train a pharmacist and which are mainly of theoretical nature. तो जितनी theory है obviously physical है, biological है, या जितने courses हैं जो pharmacy से deal करते हैं वो सब जब हम पढ़ते हैं तो that is under all theoretical pharmacy. And then practical or operative pharmacy consists of manufacturing. Practically आप करते हैं क्योंकि manufacturing, retail, professional and hospital pharmacy, practical portion of physical and biological assessment. जो practical labs में जितना भी काम होता है, manufacturing का जितना काम होता है, retailing का जितना काम होता है, professional और hospitals की pharmacy में जितना भी काम होता है, वो सब that all come under practical or operative pharmacy. So the theoretical pharmacy consists of theory and practical pharmacy consists of the things which do in practical.
like manufacturing, retailing, then lab में जो काम करते हैं physics for physical and biological assessment. These come under the practical or operative pharmacy. Then last uses of studying homeopathic pharmacy. Studying pharmacy provides us with the knowledge of preparing the mother tincture and in dilution. तो if homeopathic pharmacy के पढ़ने के आपको क्या क्या फायदे होंगे, where you can apply homeopathic pharmacy. तो इस फार्मेसी पढ़ने के बाद आपको मदर टिंचर की नॉलेज होती है, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं. देन यू हैव द नॉलेज ऑफ डाइल्यूशंस, हाउ दीज आर प्रिपेयर्ड एंड हाउ दीज आर यूज्ड. So studying pharmacy gives a very much knowledge of, very important knowledge of how the mother tinctures are prepared, how the dilutions are prepared. Then knowledge of pharmacy also helps in selecting the right dosage to be prescribed to the patient. There is another topic, posology, which includes the science of doses or the doctrine of doses, which is the integral part of pharmacy. जब हम pharmacy पढ़ते हैं तो हमें right dose जो हमें पेशेंट को देनी है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन पता लगती है. देन वी हैव थर्ड इन हेल्थ इन राइटिंग अ प्रिस्क्रिप्शन इन द प्रॉपर फॉर्म. देन another topic which we cover in pharmacy is prescription writing. So when you study pharmacy, you have an extra knowledge, detailed knowledge of prescription writing, how one should write prescriptions. So in proper form, mark the thing in proper form, so that it can be understandable to the dispenser, to all. Knowledge of drugs for external application. If somewhere external application is required, then how external application is formed, how it should be used, where it should be used, where it should not be used. This knowledge of external application has a separate chapter in homeopathic pharmacy, which can be read, understood, and then can be used. So these are the some few uses of studying homeopathic pharmacy. One last thing, pharmacist. A person who is skilled or engaged in pharmacy, one who prepare or dispense medicine. A druggist or pharmaceutical chemist legally qualified to sell drugs. ऐसा person जिसको पूरी knowledge है pharmacy के बारे में, preparation of medicines के बारे में, dispensing of medicines के बारे में, उसको वो pharmaceutical chemist है, उसको और legally qualified है to sell drugs or poisons. तो उसके पास legally you can say license है, उसने पूरी पढ़ाई की हुई है medicine के बारे में, प्रिपरेशन डिस्पेंसिंग के बारे में, उन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट है, केमिकल नॉलेज, सारी नॉलेजेस हैं उसके पास. एंड देन आल्सो ही इज लीगली क्वालिफाइड टू सेल ड्रग्स एंड पॉइजन्स. दैट पर्सन इज कॉल्ड फार्मासिस्ट. So this is all regarding general pharmacy. What is pharmacy, what it include, how it can be used, how can it be learned, what more you can learn in homeopathic pharmacy. This is all about that topic. So this is all for now. Thank you for listening. Take care, you all.